And now we're taking you live to Islamabad, where the Kashmir Siege Day is being held with a Kashmir Solidarity Walk, where President Dr. Arif Alvi is speaking. As you can see on your screens, the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, has taken to the stage where he is about to address the audience regarding the Kashmir Solidarity Walk and the Kashmir Siege Day, which is being observed today, which is the 5th of August, 2021. Since 2019, Kashmir has been under the Indian occupation's siege, where there has been a communications lockdown, there has been a curfew put in place. A moment of silence will also be held for the fallen Kashmiris. Again, you can see on your screens, President Dr. Arif Alvi is taking the stage for this Kashmir Siege Day, which is being held today on the 5th of August, 2021. Since 2019, Kashmir has been under siege. सायरन बज रहे हैं, खामोशी अख्तियार करें। A moment of silence is being observed for the fallen Kashmiris who have lost their lives to the Indian occupations. During the Kashmir Solidarity Walk, the Foreign Minister, Shah Mahmood Qureshi, along with Minister of Broadcasting and Information, Mr. Fawad Chaudhry, along with Dr. Arif Alvi, who is the President of Pakistan, have joined the Kashmir Solidarity Walk. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ के लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपने ही आइन के अंदर आर्टिकल 370A और 370 और 35A के एतबार से जो तब्दीलियां की, जिससे पाकिस्तान पहले भी इत्तेफाक नहीं करता था उन आर्टिकल्स के साथ, क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर जिस तरह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, उसी तरह से उन उसूलों की बुनियाद पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। उन उसूलों को पामाल किया गया। उसका नतीजा ये है कि जुल्म और ज्यादती जो डोगरा राज के हवाले से कश्मीर में चल रही थी, वो हिंदुस्तान ने जारी रखी है आज तक। हमारे भाई, हमारी बहनें As you can see on your screens, President Dr. Arif Alvi is speaking regarding the injustice being held in Kashmir, where India revoked the special status of Jammu and Kashmir granted under the Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir. आज भी चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मेरे कश्मीरी भाइयों और बहनों से वादा किया था कि हक़ रायदही का हक है आपके पास, इस्तेमाल होगा, मगर वक्त के साथ साथ दुनिया खामोश होने लगी। Over the period of time, UN resolutions have not been implemented as per promise, and the Kashmiris are suffering. हिंदुस्तानी अफवाज जिस तादाद में कश्मीर के अंदर हैं, वो दुनिया के लिए Indian troops have entered Kashmir in a great number, trying to change the demography of Jammu and Kashmir. पाकिस्तान की तरफ जो आजाद कश्मीर का हिस्सा है, वहां को पुरअमन आपने हमेशा देखा। As you have seen in Azad Kashmir, which is located in Pakistan, has seen tremendous peace, unlike Jammu and Kashmir, rather Indian-occupied Kashmir, which has suffered greatly due to communications lockdown, due to injustice, due to cordon and search operations, due to target killings, and so forth. अपने कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहता हूं, fundamental human rights have been barred. हम आपके साथ रहेंगे,
जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा पाकिस्तान का कोई फर्द चैन से नहीं बैठेगा। The people of Pakistan stand by the people of Kashmir, and they will not rest until Kashmir obtains its freedom and its right to self-determination. Every Pakistani stands with the people of Kashmir. Prime Minister Imran Khan has gone to every international forum and highlighted the Kashmir issue wherever he possibly could. As has the Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi. और बावजूद इसको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। Even then, this issue has been placed on the back burner. आबादी को बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। The demography of Indian-occupied Kashmir is being changed significantly. जो मेरे फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वही हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर शुरू किया है। Just as the tactics used by Israel in Palestine, India is using similar tactics in Kashmir. मगर दुनिया की तारीख गवाह है कि किसी कौम को दबाया नहीं जा सकता। But history is evidence that no community or no group of persons can be pushed down. A great deal of injustice is being carried out in Indian-occupied Kashmir. हम हिंदुस्तान को वार्निंग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत कौम है। पाकिस्तान वो कौम है। Dr. Arif Alvi is giving India a warning, stating that Pakistan is a strong country and will not back down. एक मजबूत पाकिस्तान उभर रहा है और ये वो मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीर को आजाद करा कर छोड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कश्मीरी भाइयों के साथ कि हम आपके साथ हैं। And the territory of Kashmir is liberated. They are playing with fire. India is playing with fire. इस हुकूमत ने बार-बार इस बात का इरादा किया था कि आओ बैठो बात करें, मगर अब ये बात तय है। The government of Prime Minister Imran Khan has on countless occasions asked, requested, and even demanded India to come to the negotiation table so talks can be held. और पाकिस्तान के जिस्म का बाजू होना था, मगर ये कि जब तक आप वो 370 और 35A को आप वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान का ये बयानिया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप जब तक जुल्म बंद नहीं करेंगे कश्मीर के अंदर, जब तक हालात मामूल पर आने का कोई इम्कान नहीं है। मैं इस हुकूमत की तारीफ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम की तारीफ करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं Again, on your screens, you can see President Dr. Arif Alvi stating that the situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir is in shambles. The people are suffering. The Kashmiris are suffering. जब भी मौका मिलता है, छोटा सा ग्रोह भी उठता है वहां पर, तो वहां पर नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आवाज उठती है कि तुम क्या चाहते हो, जवाब आता है आजादी। इसके अलावा कोई तीसरा उनका मौक़िफ़ ही नहीं है। मैं इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि हिम्मत बांधे रखो, हम तुम्हारे साथ हैं और हिंदुस्तान तुम डर से रहो। एक क़ुव्वत उभर रही है इस रीजन के अंदर जो बड़ी तगड़ी है और जो किसी की बात जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया। 14 के लिए कश्मीर बनेगा, हम लेके रहेंगे। On your screens you can see President Dr. Arif Alvi के लिए दुआ की जाए। joining his hands along with the crowd for a prayer for the Kashmiris. Again, a moment of silence is being held for the Kashmiris who have lost their lives. Again, various cordon and search operations, kidnappings, communications blackout, lockdowns, curfews have taken place in Kashmir, specifically Indian-occupied Kashmir, due to the Modi government, which has created a great deal of backlash from the Kashmiris themselves. The demography of Kashmir has been tried and pushed to be changed.
Again, it is the BJP party of India, which has stripped Kashmiris of their special autonomy that they've had for 7 decades through a rushed presidential order back in August 5th, 2019. They've repealed Article 370 of the Constitution, where the people from the rest of India can now acquire property rights in occupied Kashmir and even settle there permanently. Kashmiris, as well as critics of India's Hindu nationalist-led government, see the move as an attempt to dilute the demographics of the Muslim-majority Kashmir with Hindu settlers. It is a great struggle for Kashmiris, which has been highlighted by not only the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, but the Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, along with other various ministers at various international platforms, trying to get the Kashmir